Assalamu alaikum, my dear students of class 6. Welcome back to your online lecture, and I'm your teacher Mariam Hassan from Jinnah Officer School. Okay, dear students, before starting our work, let me remind you that today is 6th September, which is also called Defense Day. So, happy Defense Day to all of you. Okay, ji, let's start what we have today. Yes, we are going to do today vocabulary, which is on page 212, lesson number 3. So, let's start. Yes, before doing our work, put date and day first. Okay, and after putting date and day, you can do your work with a pen or pencils, but do it very, very neatly. Okay, what we have today is part A, which is called formation of adjective. Yani they have given you words and in which you have to make their adjectives. ठीक है, इसम सिर्फ हमने इनके बनाने हैं, and you have to write down the word in front of each given word. Pain, painful or painless, both can be correct. ठीक है, so write down full complete answer. Do not give a short answer, it wouldn't be considered. Okay, so please write down a full complete word in front of that. Fright, frightened, frightened, frightened. I'm going to repeat it again. frightened, frightened. Moment, momentary, momentary, momentary. Next word is courage, courageous, courageous. The complete answer is courageous, courageous. Next word is helpless, helpless भी हो सकते हैं और helpful, both answers can be correct. ठीक है, next is called skinny, skin से skinny, SKINNY, skinny. Bonny, BONEY, bonny. Honesty, honest, honesty से honest, HONEST. Next word is injury, injurious, INJURIOUS, injurious. Study, studious, STUDIOUS, studious. ठीक है, STUDIOUS, studious. Okay, class. Okay, students. Okay जी, now do the exercise B, which is called given an antonym for each word. यानी आपने हर word का एक antonym लिखना है. Friendly, hostile, HOSTILE, hostile. Best, worst, WORST, worst. Courage, cowardice, 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 cowardice. ये courage का antonym है. ठीक है, quickly, slowly. Relief यानी आराम, relief antonym is hurt, HURT, hurt. Next word is clean, dirty, it's antonym. Large, small, large, small. Gently, roughly, ROUGHLY, roughly. Less, more, less, more. Often, seldom, often, seldom, SELDOM. So these are the antonyms. Okay, let's find out what we have on 213 page. Sorry, it's on still on 212 page, which is called association. Fill in each blanks with the correct word from the brackets. यानी आपको उन्होंने 3 वर्ड्स दिए हैं और जिसमें से हमने करेक्ट एसोसिएशन यानी जिसका जो पूछा गया उसकी हमने एसोसिएशन फाइंड आउट करनी है. लाइक ईयर इज़ टू हेयरिंग, ईयर कानों से हम सुनते हैं, एज आई इज़ टू साइट. ठीक है, द वर्ड करेक्ट वर्ड इज़ फ्रॉम द ब्लैंक इज़ from the option is sight, SIGHT, sight. So you have to write down the sight in the blank. G. On next page, same exercise is on the next page. Nose is to smell, as tongue is to हम अपनी ज़बान से क्या करते हैं? Yes, taste. So write down taste.
रिस्ट इज़ टू आर्म एज एंकल इज़ टू, यानी कि कलाई जो है वो बाजू से ताल्लुक़ रखती है, तो हमारा जो टखना है वो किससे ताल्लुक़ रखेगा? एंड ऑब्वियसली लेग, टांग के साथ, ठीक है। नॉट विथ थाई, नॉट विथ काफ, इट इज़ एसोसिएटेड विद द लेग। टो इज़ टू फुट एज फिंगर इज़ टू, अब हमारे जो पाँव का अंगूठा है उसका ताल्लुक़ तो ऑब्वियसली पाँव से ही है, तो इसी तरह उंगलियों का ताल्लुक़ किससे होगा? यस ऑफ कोर्स विद द हैंड, ठीक है। फुट इज़ टू मैन एज डैश इज़ टू डॉग। हूफ, क्लॉ और पॉ, याद रखिए हूफ जो है वो हमारे उन जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनके जैसे लाइक उनके पाँव नहीं होते, और वो हॉर्सेस देख लें, शीप देख लें, उनका जो एक स्टाइल है जो पाँव का उसको हम हूफ कहते हैं। क्लॉ जो होते हैं वो यूजुअली वी यूज़ विद फॉर द बर्ड्स, एसोसिएटेड विद द बर्ड्स, और पा जो होते हैं वो यूजुअली एसोसिएट विद द कैट्स एंड डॉग्स और एनिमल्स लाइक टाइगर, ठीक है। सो यहाँ पे हम पॉ को इज़ टू डॉग के साथ करेंगे, ठीक है। वॉकिंग इज़ टू लेग्स एज डैश इज़ टू विंग्स, ऑब्वियसली विंग्स किनके होते हैं? विंग्स फॉर फ्लाइंग, ठीक है। सो फ्लाइंग इज़ द आंसर हेयर। ब्रीथिंग इज़ टू नोज एज डैश इज़ टू माउथ, एंड व्हाट वी डू विद द माउथ? येस वी ईट विद द माउथ, ठीक है। तो ईटिंग ही आएगा यहाँ पे आंसर। ब्रेन इज़ टू हेड एज लंग इज़ टू, लंग का हमारे क्या ताल्लुक़ है? विद दी एब्डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट इज़ फूड इज़ टू हंगर एज ड्रिंक इज़ टू थर्स्ट। भूख का ताल्लुक़ खाने से है और प्यास का ताल्लुक़ पीने से है। सो थर्स्ट इज़ द आंसर इन आई ब्लैंक, यानी जो हमारी आई ब्लैंक है, यानी फूड इज़ टू हंगर एज ड्रिंक इज़ टू थर्स्ट, इसका आंसर है। डॉक्टर इज़ टू पेशेंट एज टीचर इज़ टू, टीचर इज़ टू pupil, pupil हम शागिर्द को कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दीज आर दी आंसर्स एंड यू हैव टू राइट देम इन द ब्लैंक्स। जी, the next one is still on page 213, which is different forms of word. They have given you different forms of word, like कोई present tense में है, कोई future में आपको second past फॉर्म में मिलेगी। तो हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस हमने देखना है कि कौन सा वर्ड इज़ करेक्ट हेयर, कौन सा वर्ड जो है वो हम ब्लैंक में फिल करेंगे। जी, वी ट्राइड नॉट टू डैश आवर यंगर ब्रदर अननेसेसरली, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एक्साइट, एक्साइटेड, एक्साइटिंग और एक्साइटेबल। ऑब्वियसली यहाँ हम एक्साइट लिखेंगे बिकॉज इट्स अ पास्ट टेंस एंड ट्राइड तो यूज़ हो गया, ट्राइड इज़ ऑलरेडी अ सेकेंड फॉर्म, तो हम यहाँ पर एक्साइट का वर्ड ही इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ ही वॉज अनवेल एंड हैड टू हैव एज मच डैश एज पॉसिबल, यानी यहाँ पे उसको क्या करना होगा? येस ऑफ कोर्स रेस्ट करना होगा, नॉट रेस्टिंग, नॉट स्ट्रेसलेस, नॉट रेस्टलेसनेस, तो यहाँ पे हम सिर्फ रेस्ट ही लिखेंगे। ही हैड बीन इन्वॉल्व्ड इन अ सीरियस, येस एक्सीडेंट, नॉट एक्सीडेंटल, नॉट एक्सीडेंटली, नॉट एक्सीडेंट, सो यहाँ पे एक्सीडेंट ही लिखा जाएगा। ही सफर्ड स्वियर डैश फ्रॉम द एक्सीडेंट, अब यहाँ हम देखेंगे कि किस चीज़ इंजर आना है या इंजर्ड आना है या इंजरियस या इंजरीज आना है। यहाँ पे हम लिखेंगे ही सफर्ड स्वियर इंजरीज, यानी ज़ख्मों से वो शदीद ज़ख्मों में है वो, फ्रॉम द एक्सीडेंट, ठीक है। सो इंजरीज इज़ द आंसर। नेक्स्ट इज द वुंड्स आर स्लोली हील और हील्ड और हीलिंग और हेल्प, यहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? द वुंड्स आर स्लोली हीलिंग, इट्स अ कॉन्टीन्यूस टेंस, तो यहाँ पे हम हीलिंग का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। वी होप दैट दे विल नॉट लीव डैश स्कार्स, ऑब्वियसली यहाँ पे हम नॉट अगली या अगलीफाई या अगलीनेस नहीं लिखेंगे, येस वी आर गोइंग टू राइट अगली स्कार्स, ठीक है। मदर डैश दी बैंडेजेस एवरी डे, नाउ दिस वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो मदर के साथ हम वी आर going to use changes, not change, not changed, not changing, changes is the answer. Mother changes the bandages every day. She treats him with great tender
or tenderly or tenderize or tenderness. Yes, you are right, tender word ही हम इसके साथ यूज़ करेंगे. She treats him with great tender. Next देखिए, father spends more time with him now. So यहाँ पे time is the correct answer, not timed, not timely, not times. यहाँ पर हम इसमें time का इस्तेमाल करें. Father spends more time with him now. ठीक है जी. Next page. Okay जी. It's on page 214. ठीक है. He buys a small dash for him every other day. Yes, you are right. Gift for him every other day. ठीक है. My brother dash his new toy car best. यहाँ पे हम अगेन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और याद होगा कि विद द सिंगुलर सब्जेक्ट हम प्लूरल एक्शन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे. तो दैट्स वाई वी आर गोइंग टू यूज़ लाइक्स हेयर. माई ब्रदर लाइक्स हिज न्यू टॉय कार बेस्ट. नेक्स्ट देखें, इट रन्स वेरी फास्ट एंड डैश ऑन हिज बैक. सो यहाँ हम स्मूथ्स लिखेंगे और स्मूथिंग और स्मूथली और स्मूथनेस. Yes, you're right, everyone. We are going to write smoothly on his bed. It runs very fast and smoothly on his bed. Okay ji students, this is it for today. Plus please, it's a very humble request to all of you that follow your online lectures. They are must to watch and you have to do all the work which is given during your this quarantine time. And please be safe, everyone. Allah Hafiz.